वेलकम. लेट्स डू नाउ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. सो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हमने कर लिए लास्ट वीडियो में. अब हम करते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. सो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, लाइक आई ऑलरेडी सेड अर्लियर, सारे के सारे किंग फंक्शंस परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन सारे के सारे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो किंग होते ही होते हैं. सो आई एम डूइंग परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हियर, व्हिच इज दिस सबसेट. मैं ये वाला सबसेट नहीं कर रही हूँ, ये हम करेंगे बाद में. दिस इज अ वीडियो आई एम गोइंग टू डू विद यू लेटर. बट अभी हम कौन सा कर रहे हैं? हम ये वाला कर रहे हैं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. ठीक है. परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं, विदाउट इवन लुकिंग एट द क्वेश्चन, यू नो दे आर एल शेप्ड, दे हैव एन इनवर्ट किंग. एल शेप्ड होते हैं तो क्या होता है? एक इनवर्ट किंग होता है. अगर एक इनवर्ट किंग होता है तो इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज बी एट द किंग. Equilibrium is always at the king. Equilibrium is always at the king. Right? Let's take examples. U is equal to minimum of 2x1 comma x2 subject to 3x1 plus 5x2 is equal to 1500. What is my पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम? ये क्वेश्चन है. मिनिमम है, स्टेप 1. मिनिमम फंक्शन है तो आप चेक करो कि वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है. कैसे चेक करोगे? रेशो शुड बी कांस्टेंट. रेशो शुड बी कांस्टेंट. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरी रेशो कांस्टेंट है. दिस इज ऑफ द जनरल फॉर्म ax1 मिनिमम ऑफ ax1 bx2. अगर ये वाला फॉर्म है तो वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग, विदाउट चेकिंग फॉर टेंजेंसी एंड एवरीथिंग, जो हम कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में MRS ही नहीं होता है. हमें पता है हम क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम इज एट द किंग. The moment we write that equilibrium is at the king, we know equilibrium condition is where 2x1 is equal to x2. आपने ये condition लिख दी, then you just have to apply this condition here. 2x1 is equal to x2, so 3x1 plus 5x2. 5x2 की जगह can I write 2x1 is equal to 1500, which means 5 into 2 is 10. 10 plus 3 is 13x1. So x1 is equal to 1500 upon 13, and therefore then x2 is equal to 3000 upon 13. इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना 2 से x1 को. राइट? दैट इज माई आंसर. तो मैंने इसके अंदर ना टेंजेंसी देखी ना कुछ और देखा. मैंने क्या किया? मुझे पता लगा कि मेरा फंक्शन जो मुझे निकालना है वो मैंने सबसे पहली चीज मैंने करी कि मैंने देखा कि वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है. अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो मैंने बोला इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? किंग पे. किंग निकाला, उसको डाला बजट लाइन में, उससे हमारे पास क्या आ गया? उसका इक्विलिब्रियम. एंड ऑफ स्टोरी. Let's do one more question. U is equal to minimum of, let's say, x1 comma 2x2 subject to x1 plus 2x2 is equal to 400. Again, first step. Is it perfect complement? Yes. It satisfies the general form of ax1 comma bx2. Equilibrium is at the king. My answer is here. Equilibrium is at the king. मेरा आंसर खत्म हो गया. इसके बाद कुछ है नहीं करने को. उसके बाद आपने मेन पॉइंट, मेन पंच दे दिया है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? किंग पे है. तो किंग पे है तो x1 is equal to 2x2 है. Then can I write 4x2 is equal to 400, which implies that x2 is equal to 200 and x1 is equal to, so x2 is equal to 100 and x1 is equal to 200. That's my solution. That's my answer. किस रेशो में होगा? या इसकी रेशो में होगा. Right? One last case. Very interesting one, huh? U is equal to minimum of x comma y square subject to 5x plus y is equal to 1000. Step 1. Is it perfect complement? Yes or no? Pause the video. Think about it. Think about it real hard.
Come up with an answer on your own and then continue the video. Pause the video right now. So, is it perfect complement or not? It is not. If you remember, मैंने बोला था general form होती है u is equal to minimum of a linear, comma a linear. जहां पे आपने इसको स्क्वायर लगाया तो ये लीनियर नहीं है. अगर ये लीनियर नहीं है तो ये perfect complement नहीं है. So is it a perfect complement? No, it is not a perfect complement. अब now what do? We know that it's not a perfect complement. Then क्या करेंगे? Perfect complement होता तो kink होता. Perfect complement तो है नहीं तो क्या करेंगे? कोई नया फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है, ट्राई करते हैं. हम डायग्राम बनाएंगे. क्या बनाएंगे? आईसीज बनाएंगे. कैसे? हमारे को किंक के आईसीज बनाने आते हैं. मिनिमम फंक्शन तो किंक है, किंक के आईसीज बनाने आते हैं. स्टेप 1, फाइंड आउट वेयर द किंक इज. द किंक इज हैपनिंग एट x is equal to y square, which means the kink is happening at 1, 1. The second kink is happening at 4, 2. The third kink is happening at 9, 3, and so on and so forth. Which means that my kink is happening on this curved line. अगर आप इसको देखोगे तो ये कोई curved line बन रही है जहाँ पे मेरे kinks हो रहे हैं. Kinks के बाद जो है, what is step 2? U is equal to x. वो तो simple है. These are these straight lines. Step 3, u is equal to y. वो भी simple है. Those are these horizontal straight lines. What is my IC? My IC is L-shaped only. But it is not a perfect complement because the ratio is not constant. It's not 1:1, 2:2, 2:1, 3:5, whatever. The ratio is not constant. Because it's a y square, the ratio is changing forever. Which is why it's a perfect complement. It's not a perfect complement, but a kinked IC which is L-shaped. It is not a perfect complement, but a kinked L-shaped IC. But L-shaped है तो उसमें क्या है? Invert kink है. The moment we know that it's an invert kink, where will the equilibrium be? The equilibrium will be at kink. When you say equilibrium kink पे तो आप क्या करोगे? You will put x to be equal to y square. You know the function, the budget line is 5x plus y is equal to 500. So you can actually write then 5y square plus y minus 500 is equal to 0. इसको आप फॉर्म quadratic फॉर्म के लिए सॉल्व करिए. माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, where b is y, c is minus 500, a is 5. सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा. The only thing I was trying to point out was कि ये perfect complement नहीं है, लेकिन फिर भी इसका invert kink है. अगर invert kink है तो equilibrium अभी भी कहाँ पे होगा? Kink पे होगा. Kink पे होगा तो आप क्या करेंगे? Kink condition apply करेंगे, उसको budget line में डालेंगे and you will get your answer. So I hope the perfect complements are clear. Kinks obviously will not be kinks. I'll do later again. I've done a video on this one. You can watch it. But perfect complements should be clear. All right. Thank you.